Hey guys, welcome back to the gameplays of Horizon Zero Dawn. We are on quest number 14, Make a Saint. This was presented as an optional quest that we can choose from. So I decided to complete this later on. So now we are going to explore what's there in the Maker Saint. Let's see if we can find the answer for the question that Aloy is seeking for. Okay, so now basically I'm going to use my golden travel pack and directly jump to the maker saint. मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बैंडेड कैंप्स को क्लियर कर दिया था, तो ये एरिया में भी मैं घूम के आ चुका हूँ ऑलरेडी. सो यहाँ पे कैंप फायर मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पे मैं जंप कर सकता हूँ. और मेरे पास एक्चुअली एक स्किल सेट भी है, सो जिससे मैं डायरेक्टली विसल करके एक किसी बफेलो को या फिर स्ट्राइटर मशीन को बुला सकता हूँ. इवन इफ इट्स नॉट अवेलेबल देयर, मैं उसको ओवर राइड ऑलरेडी कर चुका हूँ, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहीं से भी आ जाता है. सो इट गेट्स वेरी ईजी टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग दिस काइंड ऑफ विसल थिंग नाउ. सो इफ़ यू हैवंट बीन टू दिस प्लेस बिफोर, यहाँ पे बहुत सारे बैंडिट्स होंगे. तो मैंने यह पूरा एरिया ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, तो यहाँ पे कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, अभी दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं. और बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे करप्टेड टाइप के ये वॉचर्स होंगे, करप्टर भी होगा बेसिकली यहाँ पे. तो उनके सबके साथ फाइट ऑलरेडी हो चुकी है, तो आशा करता हूँ कि आगे कुछ ना मिले अभी. सो या प्रीटी मच क्लियर है. सो अभी यहाँ से सीधा आगे जाते हैं और देखते हैं. लास्ट टाइम जैसे मैं आगे गया था यहाँ से, तो बहुत ज़ोर से मुझे आवाज़ें आ रही थी, लाइक समथिंग वाज ड्रिलिंग, और कोई तो भी ज़ोर से कुछ खोदने की कोशिश कर रहा है. तो देखते हैं क्या होता है अभी. तो जब कभी भी मुझे लगता है कि आगे जाके कोई तो भी मशीन या एनिमी आने वाली है, तो मैं पहले ही सब कुछ रिलोड करके रख देता हूँ. आई हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस राइट नाउ. अदरवाइज रिसोर्सेस आपको काफ़ी सोच समझ के यूज़ करने पड़ता है. यू नेवर नो कि सामने जाके कौन एनिमी आने वाला है. बट बेसिकली आप जो व्हील देख पा रहे हो, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है. इसमें हर तरह के एलिमेंटल वेपन्स है, लॉन्ग रेंज है, क्लोज रेंज है, और बहुत सारे अच्छे वेपन्स जो मुझे बनुक से मिले थे, वो सब कुछ है यहाँ पे. तो देख लेते हैं यहाँ पे फोन पे. ओके, तो ये है डेथ ब्रिंगर. तो क्विकली देख लेते हैं कि डेथ ब्रिंगर की वीकनेसेस क्या है. इसमें कूलिंग रॉड्स है, कोर है, फ्लेम थ्रोवर, ग्रेनेड लॉन्चर, हीट वेंट्स, गन टरेट, लॉन्चर है, स्टेबलाइजर है. तो मतलब सीधा इसको जो है वो डायरेक्टली हिट लेगा. आई डोंट थिंक कि इसको एलिमेंटल वेपन्स की ज़रूरत होगी. Rotate turret! And fire! All weapons operational. Time to get it moving, and be quick about it. No daydreaming. This to be one of the Deathbringer's own talked about. I'll never get into that tower. Unless I destroy जैसे कि आपको अगर याद होगा, जब हमारा इनिशियल चाइल्डहुड वाला ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, उस वक्त रॉस ने हमें बताया था कि जो वॉचर्स है उनको सबसे पहले टेक डाउन करना चाहिए, क्योंकि वो अलार्म करते हैं आजू बाजू जो भी उनके दूसरी मशीन्स होंगी कि यहाँ पे थ्रेट है करके. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जितने भी वॉचर्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं. तो ये विसल बजा के इसको बुला लेते हैं इधर. इस गेम में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगा, अगर आप सामने खड़े होंगे ना, तो आप साइलेंट स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा साइड को रहना पड़ता है. कभी फेल हो रहा था मेरा, तो बाद में समझ में आया. तो अभी जो स्ट्राइक फोर्स जिसका सबसे ज़्यादा है, वो वाले एरोज यूज़ करता हूँ मैं. अभी ये लॉन्ग रेंज नहीं है, तो ये वाला एरो सही है, सीधा हेडशॉट लेते हैं. और ये डाउन, जो दूर वाले है उसको मारने के लिए तो मुझे दूसरा वाला वो यूज़ करना पड़ेगा. एक और बच्चे हैं यहाँ पे, चलो इसको मारते हैं.
और एक अच्छी बात है कि ये अभी देखो फोकस से मैंने जिनको टैग किया है वो नॉर्मल पॉइंटिंग एरोज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है एनिमीज अभी अलर्ट नहीं है। लेकिन अगर वो मुझे देख रहे होंगे और अलर्ट होंगे तो उस वक्त वहाँ पे एक येलो सर्कल आ जाता है। तो अभी किसी के ऊपर नहीं है, तो आई कैन लाइक स्विफ्टली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट वरिंग अ लॉट। तो ये जनाब ऊपर है, तो अभी मैं इसको मतलब वॉचर को इधर बुला लेता हूँ। बट मुझे है ना, ये वॉचर को जब मैं बुलाऊंगा तब ऊपर वाले ने मुझे देखना नहीं चाहिए। ओह शिट, अभी यहाँ पे दोनों के दोनों अलर्ट हो गए हैं। देखो यहाँ पे एक येलो कलर का क्वेश्चन सिंबल आ गया है, तो अभी ये मुझे स्कैन करेंगे। बट ठीक है, ये ऊपर वाला बंदा शायद से नहीं दिखेगा, तो वॉचर को हम बुला ही लेते हैं इधर। और बुलाने के बाद साइलेंट किल करेंगे। आई थिंक ये नॉर्मल वॉचर है नहीं, ये शायद रेड आई नहीं, करप्टेड वॉचर है ये तो। बट हो सकता है साइलेंट किल इसको भी लग जाए। या गया। तो अभी ये जो बंदा है उसको मारेंगे अपन, ताकि ऊपर चढ़ के साइलेंटली बाकियों को एक एक करके हमें गिराना पड़ेगा, मतलब ख़त्म करना पड़ेगा। अगर गलती से भी वो डेथ ब्रिंगर एक्टिवेट हो गया तो हो जाएगी गड़बड़। चलो, डेथ ब्रिंगर तो उसका काम कर रहा है, यहाँ पे कोई और दिख नहीं रहा, तो हम ऊपर चढ़ते हैं अभी यहाँ से। ओके, लेट्स क्रॉच। सो इस गेम में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप इन्वेंट्री से वो कलेक्ट करते रहो। यू नेवर नो हाउ मच इन्वेंट्री यू विल रिक्वायर मूविंग फॉरवर्ड। सो नीचे ग्रास है, देख लेते एक बार। ग्रास होगी तो सीधा हम ग्रास में जाके छुप सकते हैं, नहीं तो फिर ऊपर से ही मारना पड़ेगा। और ये सामने वुडन है तो ये ज़्यादा कवर नहीं दे पाएगा हमें, तो फायर एरो तो यूज़ नहीं करूँगा, उससे जल्दी नहीं ख़त्म होगा। स्ट्राइक से ही इसको ख़त्म करते हैं। दो बंदे हैं, नहीं ये जल्दी से पहचान जाएगा अगर डेथ ब्रिंगर मैं उसको कुछ करूँ तो इसको भी साइलेंस स्ट्राइक ही करना पड़ेगा। डेथ ब्रिंगर के विजन के ऊपर तो हम नहीं आएंगे यहाँ पे, जो उसकी रडार है वो स्कैन तो नहीं करेगी ये साइड को। और दूसरा वाला बंदा जो है पीछे खड़ा है तो कोई दिखेगा नहीं, तो इसको इधर ही साइलेंस स्ट्राइक कर लेते हैं। अभी बचे दो, उनके पीठ के ऊपर एक ग्रीन पैक है, इसका मतलब है कि वो फ्लेम के लिए वोलाटाइल सब्सटेंस है, तो हम उनको फ्लेम से भी मार सकते हैं। बट मुझे नहीं मारना, वो एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा और एक्सप्लोजन की वजह से समझ में आएगा डेथ ब्रिंगर को कि हम यहाँ पे है। तो अभी के लिए हम स्ट्राइक ही यूज़ करेंगे, सीधा सीधा इसको नीचे गिराने के लिए। हेडशॉट, और ये गया। बस अब एक ही बंदा इधर बचा है और एक बंदा बाजू को है, तो इसको इधर से इधर ख़त्म कर लेते हैं। आई होप डेथ ब्रिंगर ना देखे। अरे यार, देख लिया, भागना पड़ेगा अब यहाँ से। बट ये डेथ ब्रिंगर जो है काफ़ी स्लो दिख रहा है मुझे, आई एम नॉट श्योर। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, तो इसके एक एक वेपन को अभी मैं नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ टीयर ब्लास्ट से। आई होप कि कुछ हो जाए। इसको तो फर्क भी नहीं पड़ रहा टीयर ब्लास्ट से। आई थिंक स्ट्राइक से हमें उसको मारना पड़ेगा। ओके, T42, तो इट्स टेकिंग हिट। और ये कितना फास्ट डेथ ब्रिंगर की लाइफ कैसे जा रही है, तो मर भी गया। डेथ ब्रिंगर इज डाउन। ये डेथ ब्रिंगर नहीं हो सकता भाई, कुछ तो भी सिग्नल भी है यहाँ पे। ओके, सारे एनिमीज खत्म हो चुके हैं अभी। ये सिग्नल क्या है? ओके, व्हाटएवर इट इज। सो Let's see what's on it. Let's see what you have to say. What is this? The entity lives. Unacceptable. Unacceptable. Unacceptable.
hell was that? Hades? Hey! Mysterious stranger, did you see that? No answer, huh? Figures. I need to find a way inside the tower. Hold for identiscan. One of these again. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Dr. Sobek, you are 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Pharaoh. Please proceed to the 35th floor. Wait. 350,000. That's hundreds of years ago. What's going on? तो ये फेरोस के ऑफिस में हमें जाना है। काफ़ी बड़ी फैसिलिटी दिख रही है। तो अभी यहाँ पे है ना, हर एक जगह जाके हम देखते हैं कि कहीं पे कुछ हिडन सीक्रेट्स है क्या, या फिर कोई रिकॉर्ड्स या फिर टेप्स वगैरह मिलते हैं। क्योंकि देखो, जहाँ तक मैंने गेम खेला है ना, तो हर वक्त जब भी हमें कोई डाटा पॉइंट मिलता है, वेदर इट इज़ इन ए टेक्सचुअल फॉर्मेट और इज इट एन ऑडियो फॉर्मेट, उस वक्त है ना स्टोरी की बहुत ज़्यादा डीपनेस अपने को पता चलती है कि भाई एक्चुअली में प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी। तो मैं स्किप नहीं करना चाहता। ऑडियो फाइल्स है तो उसको हम सुनेंगे। Protocols use polyphasic entangled waveforms, quantum encryption, black quartz stuff, way beyond military grade. That's what you demanded, so that's what we delivered. You don't code something you can't crack. All we need is a backdoor. Upload the latest service pack update and the problem goes away. You specifically forbade us from leaving anything resembling a backdoor in code. Every protocol to black quartz standard. Your words. Look, if you need me to fudge some projections, it's nothing we haven't done before. I don't need fudged projections. I need a way to reassert control over the Hearts Timor swarm. I don't know what to tell you, Ted. You're asking the impossible. So, codes. They needed codes of some kind to control the machines. But they got out of control. Sounds bad. अभी आगे वाले रूम में देखते हैं कि कुछ मिलता है क्या। एक सप्लाई क्रेट तो मिल चुकी है। हेल्थ तो अपनी फुल है भाई, हेल्थ की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने एडिशनल मेडिसिन ऑलरेडी कलेक्ट करके रखे थे, और रॉस ने चाइल्डहुड में बताया था अपने को कि हमेशा ये मेडिसिन पाउच में रखना। तो आई एम टेकिंग दैट नोट। अभी भी मैं मेडिसिन पाउच में रखता हूँ, और कॉम्बैट के वक्त काफ़ी हेल्प होती है उसकी। Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. And they honored it? Welcome to Faro Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Faro leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Faro Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe. What was this place? What were they doing here? It was a corporation. A group of people not unlike a tribe. And they made machines. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your Focus. They'll help you understand.
Now, I know this must seem like a bizarre change in direction. I mean, we're Faro Automated Solutions, right? #1 robotics firm in the world. Why would we clear our production slate to fabricate human-operated vehicles and weapon systems, the relics of the past? All I can say at this juncture is... trust me. We will be exploiting a massive, growth opportunity by retooling and reallocating capacity according to my plan. So I will need revised projections of mass fabrication velocity across every pipeline within 36 hours. Smell to it. So they were making machines, then they stopped to make other kinds of weapons. Why? So हम कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहे हैं और हर जगह पे कुछ ना कुछ दिख रहा है. इट्स मोर लाइक एन ऑफिस, फैक्ट्री की तरह कुछ तो भी लग रहा है, बट इट्स लाइक एन ऑफिस. तो चलो सप्लाई क्रेट में से उठा लेते जो भी चीज़ें हमें मिल सकती है. इधर कुछ है क्या, नहीं है. चलो आगे देखते हैं. नथिंग ओवर हियर. लेट्स गो बैक. तो ये वाला पोर्शन तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है. अब मेन इवेंट जिधर है, मेन लोकेशन, उसकी तरफ जाके देखते हैं. इधर कुछ है क्या, नहीं, डेड एंड है. ओके, सो ठीक है, डाटा पॉइंट मिल चुका है. आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट. मैं तो नहीं पढ़ूंगा अभी. But I could get through. ये साइड को भी कुछ नहीं है. फोकस में कुछ मिलता है क्या, नहीं है. ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट एट द डेड एंड ओवर हियर. और आगे जाके देखते हैं कुछ मिलता है क्या. तो सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है भाई, यहाँ तो कुछ ओके. देयर इज अ लैडर. Looks like I can climb here. ठीक है, नीचे क्या है, नीचे जाके देखे क्या एक बार. ओके, हॉलो प्रोजेक्टर है. आई शुड एक्सप्लोर दैट हॉलो प्रोजेक्टर. एक बार जाके देखता हूँ. I'll bet I can use that as a ramp to get back up. ओह अच्छा, ये वाली साइड को तो हम ऑलरेडी आ चुके थे शायद. आई डोंट थिंक यहाँ पे फिर से कुछ होगा, या फिर वो हॉलो प्रोजेक्टर काम कर सकता है. आई एम नॉट श्योर. एक बार फिर से जाके चेक करें. लेट्स सी इफ इट इंटरैक्ट्स. कुछ पिकअप तो नहीं हो रहा है. चढ़ के देखेंगे उसके ऊपर एक बार. एक्टिवेट हो जाए भाई ना. नहीं हुआ है. चलो ठीक है, लेट्स मूव बैक. जो लैडर दिखी थी उसके ऊपर चढ़ते हैं. ऊपर कुछ तो भी चढ़ने के लिए होल्डर्स वगैरह दिख रहे थे. ओह, सामने भी एक लेज है. शायद कुछ मिले यहाँ पे. कुछ है, कुछ दिख रहा है. देयर इज समथिंग. आई थिंक सप्लाई क्रेट होगा. यप, परफेक्ट. सो विल ड्रॉप डाउन अगेन. और वो जो बाजू वाले होल्डर्स थे उसको पकड़ के हम जाते आगे. ये एक्शन एडवेंचर गेम है. इसको देख के है ना, मुझे वो टॉम राइडर वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है. ऐसा ही गेम है टॉम राइडर भी, लेकिन वो आरपीजी वाले एलिमेंट थोड़े से मिसिंग है. इसमें बहुत ज़्यादा आरपीजी नहीं है, बट ठीक है. यू गेट द चॉइसेस कि आप किस तरह से सामने वाले के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. like using your brain or heart or strong element or something like that, but उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. टेम्पररीली थोड़े से डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं, बट स्टोरी लाइन इज़ नॉट अफेक्टेड. कुछ गेम्स होते हैं जिसमें स्टोरी लाइन चेंज होती है. द वे यू ओके अगेन डेटा पॉइंट, द वे यू चूज टू आंसर. तो इसमें वैसा कुछ है नहीं. So people were angry at Faro. यहाँ पे सप्लाई क्रेट है. They blamed this और place फिर for से something. डेटा पॉइंट है स्पिरिचुअल समिट. यू कैन रीड इट अगेन इफ यू वांट. स्क्रॉल करके दिखाता हूँ. ठीक है, नहीं है कुछ देखने जैसा. ओके, ऑलराइट. सो इधर ओके, काफ़ी बड़ी रूम दिख रही है. शायद कुछ मिले यहाँ पे. प्रोजेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे फिर से. 1 2 और
तीन तीन प्रोजेक्टर है। शायद हिस्ट्री के बारे में कुछ यहाँ से सीखने को मिले, क्योंकि देखो प्रोजेक्टर यूजुअली ऑफिस में हम क्यों यूज़ करते हैं कि भाई जो भी फैसिलिटी है उस फैसिलिटी में क्या मतलब चीज़ें आप एज अ ऑडियंस देख सकते हो, तो वही कुछ मिलेगा यहाँ पे। सो एक एक करके सारे के सारे प्रोजेक्टर एक्सप्लोर करते हैं। The BOR-7 Horus. Imagine your complete engagement ecosystem comprehensively managed by a high-speed learning machine network. Whether your need is to replace battlefield losses or intensify force projection, the Horus's onboard manufacturing capabilities mean you'll never get stuck waiting for the next arms delivery. Simply redefine your force parameters, and the Horus will fabricate additional units to fill the ranks for an affordable per-unit licensing fee. Meanwhile, the biomass conversion systems of other chariot line models allow them to keep the Horus fueled, repaired, and ready, extending its operational tolerances beyond that of any competing Titan-class platform. That's the Horus advantage. Always regulating, always ready. The future of automated warfare made real today. The Metal Devil. So these were Faro machines too. Manufacturing capabilities. They can make more of themselves. Then how would you ever stop them? The ACA-3 Scarab combines conventional and information warfare capabilities in one package. Designed for high-speed, all-terrain reconnaissance, it boasts the world's highest survivability rating of any Scout-class autonomous agent. Maybe it's the Scarab's emergency biomass conversion systems that ensure it always makes it back to base, even if fuel supply lines have been interdicted. Or maybe it's the Scarab's ability to slave enemy robots to its own network. Now that's force multiplication. Add a prehensile manipulator arm that can handle a host of functions, from 360-degree less lethal riot management to surgical repairs of allied chariot line models, and you've got the workhorse of any cutting-edge peacekeeping fleet. The Corruptor. Slave enemy robots to its own network. It sounds like it's talking about how it corrupts machines. The FSP-5 Kopesh provides a one-size-fits-all solution to main battle force capability. Metamaterial construction delivers unmatched recoil dampening, allowing you to field any weapon package that conforms to your budget needs and conflict resolution profile. Patented biomass conversion systems allow extended emergency operations with minimal environmental impact. Multilinear target processing provides simultaneous real-time threat analysis and legal review for autonomous domestic operations. Or control can be slaved to the swarm's neural network for weapons-free force application. Either way, when it's time to call out the big guns, it's time to call Kopesh. The Deathbringer. So this was the heavy hitter. Main battle force indeed. Looks like the way up. What's left of it. Gonna be a long way up. Frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, guess I can too. ओके, ये साइड को देख लेते हैं और कुछ है क्या। ऊपर जाने का तो रास्ता दिख रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट एलिवेटर एंट्रेंस की तरह कुछ तो भी दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना ये वाला पोर्शन पूरा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि ऐसे जगह पे कुछ ना कुछ हिडन मिलता ही मिलता है। तो
हम एक बार ऊपर चढ़ के देखते हैं तो ऊपर के साइड पे अगर कुछ मिलता है हमें हिडन वगैरह हो तो। नहीं 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 नहीं, आई थिंक आई मिस्ड एन एंट्री। ये वाला रास्ता नहीं, अच्छा इधर से ही आए थे हम। चलो ठीक है, ऊपर जाते हैं एक बार ये साइड से ही, एंड देन वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं एरिया को। That began when they engaged in unauthorized offensive operations against robots and human personnel of the Hearts Timor Energy Combine. Now I wish that I could relate that the crisis has been exaggerated, but it's not. The peacekeepers have not responded to stand-down codes, and by all signs they appear to be replicating at a precipitous rate. Now what I can promise you, can absolutely assure you, is that I am already devoting every possible resource towards reaching a speedy conclusion to this issue. So when you hear the bad talk about us against this company in the days, maybe weeks to come, just bear in mind that we will get past this. That a day's coming when none of this will matter. Peacekeepers. That's what they called their machines. They were built for war, not peace. ओके पीछे तो कुछ हमें मिला नहीं है, घूम फिर के वही हम लाइक सेम जगह पे वापस आ चुके थे। बट जैसे यहाँ पे ऊपर से मुझे दिख रहा है हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कि और कितना ऊपर जाना है, क्योंकि ये पॉइंट देखो हमेशा ऊपर ही मतलब दिख रहा है कि भाई ऊपर जाना है करके पॉइंट कर रहा है। तो आई एम लाइक लिटिल बिट स्केयर्ड ऑफ हाइट्स इवन दो दिस इज़ गेम। बट चलो देखते हैं कि कहाँ तक चढ़ाई करनी पड़ेगी इस बिल्डिंग की। किधर जाना है भाई? ओके यहाँ से ऊपर, ठीक है। फाइनली एक लेज आ चुकी है, और देखते हैं कि इधर से किधर जा सकते हैं। नीचे ही जाना पड़ेगा आई गेस। लेट्स जंप। ओके इधर कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। लेट्स गो टू दैट साइड। आई थिंक ये मेन एंट्रेंस है। पॉइंटर तो सीधा दिखा रहा है यहाँ से। एक और डेटा पॉइंट। डोंट टेल मी कि अभी फिर से ऊपर चढ़ाई करनी है। नहीं, अभी एक काम करते हैं, हम ऊपर जा ही रहे हैं ना, तो लेट्स मेक श्योर कि हम एकदम टॉप तक जाए, जहाँ तक ये लेके जा सकते हैं वहाँ तक। तो लेट्स गो अप। नीचे भी एक रास्ता है, उधर पिन पॉइंट कर रहा है, बट लेट्स नॉट स्टॉप, लेट्स गो अप। अब मन बना लिया है तो ऊपर ही जाएंगे अभी। तो देखो अभी भी बोल रहा है कि नहीं भाई तेरे को नीचे जाना है, अभी ऊपर जाने के लिए बोल रहा है। दैट्स वियर्ड, आई एम नॉट श्योर। मैं तो सीधा ऊपर ही जाऊंगा अभी, मतलब गेम में। ठीक है, एक और डेटा पॉइंट है यहाँ पे शायद। यप, ओके, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जो लोकेशन का पिन पॉइंट है वो भी सीधा दिखा रहा है। इधर लिफ्ट में कुछ है क्या? ओके, ये प्राय ओपन नहीं होगा, नथिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो जाते हैं लोकेशन की तरफ। मैन, और चढ़ाई करनी है। ठीक है, फाइनली एक ओपन जगह आ चुकी है। इट लुक्स लाइक अ कॉन्फ्रेंस, पता नहीं क्या है। तो अच्छा, इधर भी जाने के लिए जगह है, चलो ऊपर जाते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं तो एकदम टॉप पे जाने वाला हूँ। सो लेट्स सी।
और ज़रूर यहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ होगा, इसके अलावा तो यहाँ पे वो होल्डर्स दिए नहीं होंगे जहाँ से हम क्लाइंब कर सकते हैं। बहुत ऊंचाई पे हो यार, नीचे। ओ माय गॉड, ये बहुत नीचे है, इट्स टू डीप। रैपल डाउन भी करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पे पावर सेल मिल गया। एक्चुअली पावर सेल को ढूंढ रहा था मैं। एक एंशिएंट आर्मरी है जहाँ पे आई थिंक हमें किस तरह का एक ये मिलने वाला, सूट मिलने वाला है। आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह का होगा। ये सबसे कूल चीज़ लगती है मुझे, रैपल डाउन वाली। भाई साहब एक बार नज़ारा देखो यहाँ पे, मतलब सब पहाड़ी है, पहाड़ी हिमालय की चोटी की तरह। नाइस, लेट्स गो बैक। वो देखो नीचे कुछ ऑफिस के तौर पे दिख रहा है। इट लुक्स लाइक अ कॉन्फ्रेंस। कुछ है कि यहाँ पे एक डोर है, ठीक है, ओपन हो सकता है वहाँ पे। ओके, एक सर्वर के तरह कुछ तो भी दिख रहा है। लेट्स सी वहाँ पे क्या है। तो सप्लाई क्रेट है यहाँ पे एक। भाई लूट मचा रखी है हर जगह पे, हर कॉर्नर पे सप्लाई क्रेट मिल रहा है। इसका देखो, जितना आपको ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता है उतना जाके बड़ा धोखा भी मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। Do you wish to deploy Alpha privileges to recover purge data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. कुछ ड्रैगन वगैरह आएगा कि यहाँ पे? I'm not sure, let's see. पहले तो डेटा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। Elizabeth, good to, it's been years. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. You're killing robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Another file has been recovered. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots Peacekeepers. that consume biomass as fuel, In emergencies. and you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think Everything else is just food. And at the rate it's replicating, Ted, it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Faro robots threatened all life on Earth, but somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Project Zero Dawn. Jesus, Liz. There has to be another way. If there were a nicer way to fix your mess, I would have proposed it. But this? This?
When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted. It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. You don't have to threaten me. I'll sign. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching, and I'm still no closer. That's your reaction to everything you just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's the one you choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. For years, I've suspected that Faro robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime, and what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking another question? Something less trivial. All right, Silence. You've made your point. I came to these ruins hoping to learn more about this Elizabeth Sobek. And I have, but I still don't understand my connection to her. Or why the Eclipse is trying to kill me. Or who Hades is. No answers, just one question after another. Exactly. Which is why it's time to expand your frame of inquiry. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a personal riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Faro robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The Old One's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? Not so fast, Silence. You've got some explaining to do. I've told you quite enough. If you still got questions, be quick about it and stop wasting my time. So far as I can tell, the Eclipse are just following orders.
It's Hades who wants me dead. Who is he? I don't know. The Eclipse describe him as a buried shadow, some kind of devil. That thing that spoke to me outside, that made that focus explode. That was Hades. It didn't seem like a person or a machine. More like a phantom. With a terrible voice. All that's certain is that he wants you dead. Because of my connection to Elizabeth. Has to be. Hades is using the Eclipse to resurrect feral robots. But if Elizabeth found a way to stop them centuries ago, if she made special weapons, maybe Hades is worried I'll do the same thing. In some of the ancient data I've recovered, there are hints of so-called super weapons being developed. Maybe to stop the robots, the civilization of the old ones had to destroy itself. Now if that's enough talking, be on your way. Oh no. I'm just getting started. You've been getting a free ride on my focus, risking nothing while I risk everything. All I have to do is take this thing off my head, and you'll be blind, deaf, and dumb. So quit complaining and answer my questions. Very well. Proceed. You said you've known for some time that Faro war machines destroyed the civilization of the old ones. The evidence pointed that way. But until now, I never knew the full scope of their danger. That they could process organic matter into fuel, or that the Horus class could manufacture more robots. Like a cauldron on legs. But the robots we've seen so far, the Corruptors and Deathbringers, they don't do those things. Not yet, anyway. So far, we haven't encountered any that are undamaged. At full power, who knows what they're capable of? Who are you, Silence? And what are your intentions? You really need to make this personal? I'm a lone wanderer who left his tribe behind a long time ago. An explorer of forbidden places, a searcher of lost knowledge. Exactly as I said. Why do you know so much about the Eclipse? I happen to know a lot about a lot of things. If what you're really asking is whether I work for the Eclipse or anyone else, I don't. I am nothing if not independent. You've been using my focus to spy on me. How's that possible? Every focus emits a signal, a voice that only other focuses can hear. I know how to string those voices together, how to make them talk to each other, to communicate, even over vast distances. How do you learn to do that? Years of study and experimentation. In principle, it's not so different from how you override machines. I override focuses. And you can spy through other Eclipse's focuses too. Usually. All I'll say is that overriding the connections is complicated. Is there any chance that Elizabeth Sobek could still be alive somehow? It's highly unlikely, but not impossible. Some of the ancient data I've recovered includes mentions of life extension techniques. Pharmaceuticals, mostly, an ancient word for medicine. But some were still trying to perfect ways of freezing and unfreezing people. Freezing and unfreezing people? Cryogenics, they called it. But there were problems with it. Given Elizabeth's technological acumen, I can't definitively rule out that she found a way to make herself immortal. But this is speculation. Wasting time. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists as a ruin. The Asaram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person, and your manners had better be improved. सो हमें यहाँ पे आंसर्स तो बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं और गेम का ये वाला पोर्शन ख़त्म होता है मेकर सेंट। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा
tell her the और secrets of Zero. मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए